elastic behavior and mechanical properties of solids, which would answer many such questions. 9.2 Elastic behavior of solids. We know that in a solid, each atom or molecule is surrounded by neighboring atoms or molecules. These are bonded together by interatomic or intermolecular forces and stay in a stable equilibrium position. When a solid is deformed, the atoms or molecules are displaced from their equilibrium positions, causing a change in the interatomic or intermolecular distances. When the deforming force is removed, the interatomic forces tend to drive them back to their original positions. Thus the body regains its original shape and size. The restoring mechanism can be visualized by taking a model of spring ball system shown in the Fig. 9.1. Here the balls represent atoms and springs represent interatomic forces. Elasticity, now called Hooke's law. We shall study about it in section 9.4. This law, Lick-Boyle's law, is one of the earliest quantitative relationships in science. It is very important to know the behavior of the materials under various kinds of load from the context engineering design. 9.3 Stress and strain. When forces are applied on a body in such manner that the body is still in static equilibrium, it is deformed to a small or large extent dependent upon the nature of the material of the body and the magnitude of the deforming force. Deformation may not be noticeable visually many materials, but it is there. When a body subjected to a deforming force, a restoring force is developed in the body. This restoring force equal in magnitude but opposite in direction the applied force. The restoring force per unit R is known as stress. If is the force applied norm. के लोचदार व्यवहार और यांत्रिक गुणों के बारे में जानकारी जो ऐसे कई सवालों के जवाब देगी। 9.2 ठोसों का लोचदार व्यवहार। हम जानते हैं कि एक ठोस में प्रत्येक परमाणु या अणु पड़ोसी परमाणुओं या अणुओं से घिरा होता है। ये अंतर परमाणुक या अंतर आणविक बलों द्वारा एक साथ बंधे होते हैं और एक स्थिर संतुलन स्थिति में रहते हैं। जब एक ठोस विकृत होता है, तो परमाणु या अणु अपने संतुलन की स्थिति से विस्थापित हो जाते हैं, जिससे अंतर परमाणुक या अंतर आणविक दूरी में बदलाव होता है। जब विकृत करने वाला बल हटा दिया जाता है, तो अंतर परमाणुक बल उन्हें वापस उनकी मूल स्थिति में ले जाते हैं। इस प्रकार शरीर अपने मूल आकार और आकार को पुनः प्राप्त करता है। चित्र 9.1 में दिखाए गए स्प्रिंग बॉल सिस्टम के मॉडल को लेकर पुनर्स्थापना तंत्र को देखा जा सकता है। यहाँ गेंदें परमाणुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और स्प्रिंग अंतर परमाणुक बलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोच, जिसे अब हुक का नियम कहा जाता है, हम इसके बारे में अनुभाग 9.4 में अध्ययन करेंगे। यह नियम बॉयल के नियम की तरह है। विज्ञान में सबसे शुरुआती मात्रात्मक संबंधों में से एक है। इंजीनियरिंग डिज़ाइन के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के भार के तहत सामग्रियों के व्यवहार को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। 9.3 तनाव और विकृति। जब किसी पिंड पर इस तरह से बल लगाया जाता है कि पिंड अभी भी स्थिर संतुलन में है, तो ये पिंड की सामग्री की प्रकृति और विरूपण बल के परिमाण के आधार पर एक छोटी या बड़ी सीमा तक विकृत हो जाता है। Magnitude of the stress equals F A 9.1. The SI unit of stress is Nm2 or Pascal, Pa, and its dimensional formula is ml1t2. There are three ways in which a solid may change its dimensions when an external force acts on it. These are shown in Fig. 9.2. In Fig. 9.2a, a cylinder is stretched by two equal forces applied normal to its cross-sectional area. The restoring force per unit area in this case is called tensile stress.
If the cylinder is compressed under the action of applied forces, the restoring force per unit area is known as compressive stress. Tensile or compressive stress can also be termed as longitudinal stress. In both the cases, there is a change in the length of the cylinder. The change in the length L to the original length L of the body, cylinder in this case, is known as longitudinal strain. L. 9.2. Fig. 9.1 spring ball model for the illustration of elastic behavior of solids. If you try to displace any ball from its equilibrium position, the spring system tries to restore the ball back to its original position. Thus, elastic behavior of solids can be explained in terms of microscopic nature of the solid. Robert longitudinal strain L. However, if two equal and opposite deforming forces are applied parallel to the cross-sectional area of the cylinder, as shown, प्रतिबल का परिमाण इक्वल्स Fa 9.1, प्रतिबल की C इकाई नैनोमीटर 2 या पास्कल पा है और इसका विमीय सूत्र ml1T2 है। जब कोई ठोस वस्तु किसी बाहरी बल के संपर्क में आती है, तो उसके आयाम 3 तरीकों से बदल सकते हैं। इन्हें चित्र 9.2 में दिखाया गया है। चित्र 9.2 में एक बेलन को उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर अभिलंबवत 2 समान बलों द्वारा खींचा जाता है। इस मामले में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल को तन्य प्रतिबल कहते हैं। यदि बेलन पर लगाए गए बलों की क्रिया के तहत दबाव डाला जाता है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल को संपीन प्रतिबल कहते हैं। तन्य या संपीन प्रतिबल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी कहा जा सकता है। दोनों ही मामलों में बेलन की लंबाई में परिवर्तन होता है। पिंड, इस मामले में बेलन की मूल लंबाई L में लंबाई L में परिवर्तन को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। L 9.2 चित्र 9.1 ठोसों के लोचदार व्यवहार के चित्रण के लिए स्प्रिंग बॉल मॉडल। यदि आप किसी गेंद को उसकी संतुलन स्थिति से विस्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो स्प्रिंग सिस्टम गेंद को वापस उसकी मूल स्थिति में लाने का प्रयास करता है।